Hello students, today we'll discuss the last property of thermodynamics, that is known as Gibbs energy. It is represented by capital G and it is defined as the maximum amount of energy that is available to a system during a process that can be converted into useful work. मतलब जितनी एनर्जी किसी सिस्टम से ऑब्टेन कर सकते हैं उसे यूजफुल वर्क ऑब्टेन करने के लिए उसे बोलते हैं गिब्स एनर्जी. Now let us understand the meaning of this by using an example. Suppose you have a pocket money of rupees 500. Okay, this is your pocket money. Now what you do, you are asked in the school to donate some amount for the social work. So out of this 500 rupees, suppose you use 200 rupees for the social work for donation, and the rest 300 rupees you kept for your own freedom. Means you want to go to restaurant, you want to go to market with your friends, so you kept this amount for your to maintain your own freedom. Clear? So out of the total money you have, this is the useful work that you have done, and Gibbs energy is the useful work, मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम. तो अगर तुम्हारे पास 500 रुपीज़ हैं, उसमें से तुम 200 रुपीज़ यूज़ कर रहे हो सोशल वर्क के लिए, तो ये तुम्हारा यूजफुल वर्क हो गया एंड दिस इज द नॉन यूजफुल वर्क. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. टोटल हीट कंटेंट ऑफ एनी सिस्टम is known as enthalpy. Clear? This is the total heat content of any system. मतलब उस पर टोटल हीट कितनी है किसी भी सिस्टम में, दैट इज नोन एज enthalpy. Out of this total heat content, some amount is available for converting into useful work. That means some of the amount is available energy, and out of this total heat content some is unavailable energy. Now available energy is which can be converted into useful work, मतलब उससे तुम वर्क ऑब्टेन कर सकते हो, and this is the non useful work. Clear? Now this unavailable energy is denoted by, this unavailable energy is needed, this energy is required by the system to maintain its own freedom, means to increase or decrease its entropy. तो उसकी एंट्रोपी को मेंटेन करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, that is known as unavailable energy and it is denoted by T into S. T is temperature, इन दोनों की जो यूनिट होगी वो एनर्जी की यूनिट होगी. हाउ? टेम्परेचर इज इन केल्विन एंड एंट्रोपी इज इन जूल पर केल्विन. ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द यूनिट ऑफ energy. So it is unavailable energy, and this is available energy which is work useful, means useful work that you can obtain, and this is known as Gibbs free energy. So how can you denote Gibbs free energy? Gibbs free energy is the useful work that can be obtained from a system. See, we have learned two types of work. One is expansion work, this that is also known as PV work, and another is non-expansion work. Non-expansion work examples are gravitational work, MGH, or electrical work. So these are non-expansion work and they are the useful work, means जिससे हम work obtain कर सकते हैं. But PV work is used for expansion or contraction, and that is the non-available work or non-available energy. So decrease in Gibbs free energy is equal to the useful work that can be obtained from the system. What does it mean? Suppose the value of delta G is minus 50 joule, means you can obtain 50 joule of work from that system. So 50 joule of work can be obtained from that system. Clear? That is the meaning of decrease in Gibbs free energy is equal to work useful. We can write it, decrease in Gibbs free energy minus delta G is equal to work useful.
Now from this we can write G is equal to H minus Ts. This is enthalpy. H, it is equal to available energy plus non-available energy. So we can write G is equal to H minus Ts. Exact value of G cannot be calculated. So we calculate the change in Gibbs free energy, and at constant temperature delta G will be equal to delta H minus T delta S. Now G, what are the properties of Gibbs energy? It is a state function, means it depends upon the initial and final state of the system and not upon the path followed. Second, it is an extensive property. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स इट विल डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट सिस्टम. इस चैप्टर में जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, यू हैव स्टडीड इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी. ऑल ऑफ देम आर स्टेट फंक्शंस and they are extensive properties. Now this change in Gibbs free energy is the sole criteria for predicting the spontaneity of a reaction. feasibility means reaction possible है या नहीं है, और spontaneity of a reaction. क्लियर. सो हम जब डेल्टा एस टोटल से स्पॉन्टेनिटी फाइंड करते हैं, then delta S total must be greater than 0. In that delta S total we have to find the entropy change of the system as well as the surrounding. दोनों की find करनी होती है, and it is always not possible to find the entropy change of the surroundings. So we can use the delta G of the system or free energy of the system to predict whether the reaction is feasible or not. तो हम system को use करके predict कर सकते हैं कि वो reaction possible होगी या नहीं होगी. Let us check how. See, if delta G is less than 0 or it is negative, reaction is spontaneous. Spontaneous होगी या feasible होगी. ठीक है. If delta G is greater than 0 or positive, reaction is non-spontaneous in that direction, बट इट इज़ स्पॉन्टेनियस इन द रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है. अगर उसे रिवर्स कर देंगे रिएक्शन को तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. स्पॉन्टेनियस इन रिवर्स डायरेक्शन. एंड इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, reaction is at equilibrium. Reaction is at equilibrium. So these are the criteria for predicting the feasibility or spontaneity of the reaction. Find the value of delta G. अगर delta G negative है तो reaction spontaneous होगी या feasible होगी. If it is positive, it will be non-spontaneous. If it is 0, then the reaction is at equilibrium. Now let us see the application of this equation. You have learned the equation delta G is equal to delta H minus T delta S. Now delta H may be positive or negative, means exothermic reaction हो सकती है, or it may be endothermic reaction. Okay. Delta S may be positive or it may be negative. So we will have 4 cases here. Now what is the first case? Delta H is negative, delta S is positive. So if delta H, let us check from here, delta G is equal to delta H minus T delta S. अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, दिस वैल्यू इज नेगेटिव. ठीक है. और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव. मीन्स इट विल बी ऑलवेज भी नेगेटिव. ये हमेशा नेगेटिव होगा. एंड इफ इट इज़ नेगेटिव ऑलवेज, दैट मीन्स इट इज़ स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स. स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर. तो ऐसी रिएक्शन हमेशा पॉसिबल होगी किसी भी टेम्परेचर पे. ठीक है. नाउ लेट अस टेक द सेकेंड केस. दिस इज द सेकेंड केस. डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव. ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है. तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? दिस विल बी पॉजिटिव. दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव ना. अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? डेल्टा जी विल बी नेगेटिव व्हेन दिस वैल्यू इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. सो दिस विल बी नेगेटिव व्हेन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस. व्हाट डज इट मीन? It means that
it will be spontaneous at low temperature. अगर टेम्परेचर कम है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी T delta S. तो in that case delta H will be higher than T delta S and the reaction will be feasible. So it is spontaneous at low temperature. I hope it is clear. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस भी निगेटिव है. निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव मीन्स दिस टर्म विल बी पॉजिटिव. तो ये डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज़्यादा होगी एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर. क्लियर. नाउ कमिंग टू द थर्ड केस, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है. Now both are positive means this term is negative, this term is positive. So delta G will be negative when T delta S is greater than delta H. ठीक है. T delta S greater कब होगा delta S से? जब टेम्परेचर हाई होगा. So this reaction is spontaneous at high temperature. So that's why we say that endothermic reactions are favored at high temperatures. This is endothermic reaction. Exothermic reactions are favored at low temperature. This is exothermic reaction. Clear. Now let us take the fourth case. Delta G is equal to delta H minus T delta S. Delta H positive है और ये negative है. ये negative means this whole term will be positive. So delta G will always be, sorry, ये positive है और ये भी positive है. So ये निगेटिव है तो ये टर्म हो गया पॉजिटिव. मीन्स बोथ आर पॉजिटिव. सो डेल्टा जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस at all temperatures. Clear. So these are the four cases. From these four cases we have learned that delta G can be negative when the value having negative number will be higher than the other one. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फेवर होती है लो टेम्परेचर पर, एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर होती है हाई टेम्परेचर में. एंड व्हाट आर द कंडीशंस when the reaction will be possible at all temperature? The conditions are delta H must be negative, delta S must be positive. अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन किसी भी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगी. क्लियर. सो what you have to do, you have to remember this basic equation. This is the basic formula you have to remember. Using this formula you can find out the feasibility of any reaction. Now let us discuss two more formulas for delta G. See, delta G like delta H, we define enthalpy of formation for enthalpy of formation. Similarly we also define enthalpy, the Gibbs free energy of formation. So standard Gibbs energy of formation is defined as the sum of Gibbs free energy of formation of products minus Gibbs free energy of formation of reactants. मतलब products minus reactants. You will be given the Gibbs free energy of products as well as reactants. Products में से reactants की minus कर देंगे. You will get the delta G for that reaction. You will get the delta G for the reaction. तो delta G find कर सकते हैं किसी भी reaction का using this formula. And delta G naught formation for elements in their reference state or in their standard state is taken as 0. Just like enthalpy of formation, we also take enthalpy, Gibbs free energy of formation as 0 for elements in their standard state. Clear. This is one formula. Now I'll give you an example. Suppose you are giving this equation 2Zn plus O2 gas gives 2ZnO. This is solid, this is solid. Now the enthalpy, the Gibbs free energy for this reaction is given as minus 480 kilojoule. Clear. Now how will you find the Gibbs free energy of formation for this reaction? फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड जस्ट लाइक एंथैल्पी. ये भी 1 मोल के लिए डिफाइन है. नाउ फॉर 2 मोल्स इट इज गिवन दिस वैल्यू. सो व्हाट विल बी द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस? इट विल बी इक्वल टू -480 अपॉन 2.
minus 240 kilojoule. This will be the free energy of formation. Now if any reaction is given, you can find the Gibbs free energy of that reaction by using the Gibbs free energy of formation for different reactants and products. Clear? This is one formula. The second formula is delta G is equal to delta G naught plus RT natural log Q. Clear? At equilibrium, when the system attains the equilibrium means when the rate of forward and reverse reaction becomes equal, Gibbs free energy 0 हो जाएगी. We have learned here Gibbs free energy is 0 at equilibrium. ये 0 हो जाएगी, तो we can write 0 is equal to delta G naught plus RT. Delta G will become 0 and Q will become equal to K. Here Q is defined for any concentration at any time. K is defined only at the time of equilibrium. तो K होता है products upon reactants at equilibrium, but it is products upon reactants at any concentration at any time. Clear? So Q will become equal to K. So we can write 0 is equal to delta G naught plus RT in K. What do you get from here? Delta G naught is equal to minus RT natural log K. If you convert it into log base 10, you will get minus 2.303 RT log K. This is another formula that relates the thermodynamics in equilibrium. It relates the Gibbs free energy, standard Gibbs free energy, and the value of K, means equilibrium constant. Now using these different formulas, we will now solve the questions that were asked in different entrance exam. Now let us go to the questions. Now first question is, for a particular reaction delta H is given, delta S is given, the reaction is spontaneous at. Now first write the equation delta G is equal to, I will use another pen for you. Delta G is equal to delta H minus T delta S. Now delta G must be negative for spontaneity. Negative means the delta H is positive, this is positive, and this is also positive. So for delta G to be negative, for the reaction to be spontaneous, delta G should be negative, and for delta G should be negative, this term must be greater than delta H. So T delta S must be greater than delta H. So can we write T must be greater than delta H upon delta S? Delta H value is given 35.5. Now this is in kilojoule, this is in joule. So let us convert into joule. Multiply it by 1000 upon 83.6. When you solve this question, you will get temperature greater than 425 Kelvin. So what is the answer? B. क्लियर. सो स्पॉन्टेनिटी के लिए कंडीशन लिखो, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए. और डेल्टा जी किस कंडीशन में नेगेटिव होगा? फॉर दैट यू मस्ट नो द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस. तो दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए डेल्टा एस से, तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा. सो यू विल सॉल्व इन दिस वे. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. फॉर द रिएक्शन delta U is given, delta S is given, you have to calculate delta G. You have to use the same formula, but for in the formula you need delta H. Delta U is given here, so first we will calculate delta H from here. Delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. Now what is delta Ng for this reaction? This is 2 minus, इधर कोई भी गैस नहीं है, gaseous products minus gaseous reactants moles, so it is 0. तो you get 2. तो डेल्टा U इज 2.1 किलो कैलोरी में है, ये हो जाएगा +2. R की वैल्यू किलो कैलोरी में रखेंगे, 2 होती है कैलोरी में, 2 कैलोरी. टेम्परेचर इज गिवन 300 डिवाइडेड बाय 1000, यू विल गेट द वैल्यू इन किलो कैलोरी. ठीक है, हमें किलो कैलोरी में, ये वैल्यू किलो कैलोरी में, हमें आंसर भी किलो कैलोरीज में दिए हुए. सो विल डू द कैलकुलेशन इन किलो कैलोरी. दिस आर वैल्यू इज 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो उसे किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया. यू विल गेट 2.1 प्लस 12 1.2, दैट मीन्स इट इज 3.3 किलो कैलोरी. Clear. Now coming to delta G is equal to delta H
minus T delta H. Delta H is 3.3 minus temperature 300. Delta S is 20. Now this 20 is in किलो, ये कैलोरी में है और ये किलो कैलोरी में है, तो क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे. Now you have got 3.3 minus 6. So you will get minus 2.7. This is the answer. This question was asked in AIPMT 2014. Clear? Now coming to the next question, JEE Main 2015. एक रिएक्शन गिवन है, डेल्टा जी फॉर्मेशन दिया हुआ है NO के लिए. इसके लिए डेल्टा जी फॉर्मेशन दिया हुआ है. यू हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2. ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे. डेल्टा ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा है, डेल्टा जी फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट NO2. 2 मोल्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू डेल्टा जी फॉर्मेशन फॉर NO प्लस डेल्टा जी फॉर्मेशन फॉर O2. क्लियर? स्टैंडर्ड एलिमेंट का 0 लेते हैं, सो दिस टर्म विल बी 0. सो व्हाट यू विल गेट, 2 इंटू डेल्टा फॉर्मेशन फॉर NO2 माइनस 2 इंटू, इसकी वैल्यू दी हुई है 86.6. वी विल कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल, सॉरी जूल में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, ये आ गया. नाउ दीज आर द आंसर्स गिवन. अब इन आंसर्स को देखने से लगता है कि डेल्टा जी को रिप्रेजेंट किया है माइनस RT नेचुरल लॉग K. वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. क्लियर? ये स्टैंडर्ड थी सारी वैल्यूज. तो ये हो जाएगा फॉर्मूला. नाउ R is given, you have to use in R ऐसे ही दिया हुआ है, let us use R. Temperature is given 298 ln K. ठीक है, तो 2 इंटू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ NO2 विल बी इक्वल टू, इसे वैल्यू को इधर लेके आएंगे, 2 इंटू 86600 माइनस R 298 नेचुरल लॉग K, और ये हो जाएगा अपॉन 2. ठीक है, तो विच आंसर, कैन यू सी दिस आंसर, 2 इंटू 86600 माइनस R 298 नेचुरल लॉग K की वैल्यू रखी हुई 1.6 एंड ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5. सो दिस इज द आंसर. So in this way you have to do the questions based on delta G. I have told you all the formulas which can be asked in different numericals in this video. Mainly these two types of questions are asked. You will be given delta U and delta S. You are asked to calculate delta G, whether the reaction is feasible or not. Now this answer is coming in negative, so this reaction will be feasible or spontaneous. Or you can be asked at what temperature it will be spontaneous, so you have to look at the sign, then calculate the temperature. That's all in this session. Thank you.